Hi guys, let's quickly start about the Swiggy interview which I had. I was being asked a few questions and let's get started with the first DSA coding round. Okay, so first of all he asked me about my introduction, so let's get started by introducing myself. I introduced myself and then we started with the coding sum. Okay, I talked about my introduction, like where I am from, like what I have studied, and basically what my college is, and what all internships I have been through, then my experience, what I have done in this company. So I'm close to 3 years of experience now, so about that. And then um, I talked more about my internships than my projects. Then some of my projects are actually live, so I've talked about them as well. So he was pretty impressed by the introduction part. Then there comes the coding sum, the DNF sorting algorithm. Basically अब इसमें करना क्या था, let's assume there was an apple, there was a mango, and then there was a banana. Okay, and assume these to be 0, 1 and 2. तो ऐसा क्वेश्चन था कि एक अरे है. ओके, लेट्स सी, लाइक 1 0 0 2 0 2. ओके, 1, लेट्स से दिस वाज द अरे. ओके, तो अब मुझे क्या करना था इसमें कि आई हैड टू अरेंज इन प्लेस स्वैप करना था मुझे. उन्होंने क्लियरली मेंशन किया था कि इन प्लेस स्वैप करना था, यानी कि ज़ीरो जो है, मतलब समझो अगर अभी मुझे इसको कैसे करना था, ज़ीरो वाले पहले आने चाहिए. ओके, देन 1 वाले आने चाहिए सारे, देन 2 वाले आने चाहिए सारे. ओके, दिस वाज व्हाट वाज एक्सपेक्टेड. तो इनिशियली देखने के लिए मुझे ये सिंपल सम लगा, बट व्हेन आई स्टार्टेड सॉल्विंग आई गॉट अप विद एन एल्गोरिदम. एक्चुअली आई टेल यू विच एल्गोरिदम. सो ये था मेरा सोल्यूशन कि सबसे पहले मैंने क्या किया कि आई इज़ लेस देन जे मैंने चेक किया. आई और जे मैंने 2 पॉइंटर्स लगाए थे क्लास से फर्स्ट से, एंड मैंने क्या किया, फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर को यहाँ पे लाया है. ठीक है, एंड देन फर्स्ट नॉन ज़ीरो, या मतलब 1 या फिर 2 दोनों भी रहे ना, तो भी मुझे उसको लास्ट में ढकालने का है. एंड देन लास्ट से मैंने क्या किया, 2 वाले जो भी नंबर्स नहीं है तो उनको मैंने ये कराया. ठीक है, एंड देन माई प्लान वॉज टू स्वैप देम एंड डू दिस थिंग. बट नहीं, ये सोल्यूशन इज़ वेस्ट, दिस डज नॉट वर्क. एंड मैंने जब नेट पे चेक किया, आई गॉट द आंसर लाइक DNF सॉर्टिंग एल्गोरिदम 012 वाला जो है. आई गॉट अ वीडियो एक्चुअली ऑन दिस by some of the people over here. As you can see, sort an algorithm, DNF sorting, lead code 75. Okay, तो ये एक बार देख लेने का है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, हाँ, दिस वाज माई फर्स्ट थिंग. तो मैंने सॉल्व किया वो सम विच वाज एक्चुअली गेटिंग इन अ वाइल लूप, एंड इट गॉट स्टक इन द वाइल लूप, एंड देयरफॉर मैंने उनको एल्गोरिथम तो एक्सप्लेन किया था एंड इट वाज वर्किंग एट दैट टाइम. आई थिंक आई हैव मिस समथिंग इन दिस करंट सोल्यूशन, आई एम नॉट श्योर, बट ये वाला जो है वो एक्चुअल सोल्यूशन है उसका. ठीक है, तो वो काम नहीं किया इसके लिए, एंड टाइम वाज डन. तो वी मूव्ड to the next topic, which is he gave me a question, and मुझे LLD निकालना था, उसका LLD बताना था completely. Okay, like low level design of that particular question. Okay, तो basically what he said is हमारे पास कुछ टॉपिक्स है, एंड जब भी कोई नया टॉपिक ऐड होता है, ठीक है, आई वॉन्ट टू सेंड नोटिफिकेशन. ओके, इतना ही था. तो मैंने उनको डीप में थोड़ा पूछा, तो उन्होंने थोड़े क्वेश्चंस मुझे क्लियर किए कि लेट्स से इट वाज अ कोर्स एंड टॉपिक्स वर एडेड इन दैट पर्टिकुलर कोर्स, देन देयर वाज नोटिफिकेशन सेंड टू ईच यूज़र. ओके, तो अब मैंने क्या बताया कि टॉपिक्स के लिए अलग टेबल चाहिए, कोर्स के लिए एक अलग टेबल चाहिए, देन इन दोनों की मैपिंग के लिए एक अलग टेबल चाहिए. ओके, लूजली कपल्ड सिस्टम मैंने बताया था उनको, एंड नोटिफिकेशन के लिए अलग से ये चाहिए. इफ़ नोटिफिकेशन के लिए अलग से चाहिए ऐसा इनिशियली तो मैंने नहीं बताया. देन आई टोल्ड हिम अबाउट द बेस एंटिटी एक्सटेंडिंग, हैविंग क्रिएटेड, डिलीटेड वगैरह वगैरह जो भी है, एंड देन यूज़र के जो भी डिटेल्स अपने को चाहिए वो यूज़र टेबल में ऐड करेंगे, अपन टॉपिक्स के जो भी चाहिए उनको टॉपिक्स के टेबल में ऐड करेंगे, मैपिंग इनकी रहेगी, इनकी मैपिंग रहेगी वगैरह वगैरह. मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन दिया. बट देन लेटर ऑन व्हाट ही टोल्ड मी इज़ अगर नोटिफिकेशन इम्प्लीमेंट करना है, ओके, हाउ, एंड हाँ, देयर वाज वन मोर क्वेश्चन कि ये जो नोटिफिकेशन है करंटली इट्स व्हाट्सएप से, OTP से, फेसबुक. ओके, एंड लेटर ऑन ही वांट्स लेट्स से जीमेल, लेट्स से ही वांट्स टू ऐड ट्विटर एक्सेट्रा. ओके, कोई और नोटिफिकेशन सिस्टम है समझो, तो वो अगर ऐड करना है तो हाउ विल यू मेक द सिस्टम
compatible, easily compatible, that this can be integrated further on. Okay, तो ये क्वेश्चन था. एंड मैंने ये सब बोलने के बाद ही टोल्ड मी से नोटिफिकेशन स्लो है तो क्या करोगे, एंड देयर आर मिलियंस ऑफ यूजर्स. तो माय सॉल्यूशन वाज यूजिंग लाइक अ क्यू. So using like a queue, and in that particular queue we can probably store in all the details of the notification, and then later on when the system is has some bandwidth, it can pull out the notification by stack. Let's say it's a stack and it pops out all the stack of queue, um, not a stack, last in first out नहीं, a queue. एंड बेसिकली फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है, तो जो भी पॉप होगा वहाँ से क्यू से फर्स्ट एलिमेंट, तो हम लोग उसको प्रोसेस करके नोटिफिकेशन सेंड कर देंगे. सो दैट वाज माय मेथड विच वाज पार्टली करेक्ट. एंड ऑल्सो देन ही लेटर ऑन आस्क मी अबाउट फेल हो गया तो क्या करोगे, and then he gave me about and what is dead letter queue, how will you implement this, do you know about this. तो ये I knew this but I was not able to recall this. Okay, first thing ये बस जो कि फील्ड मैकेनिज्म के बारे में था. then he asked me about DQ, then he asked me about pub sub, and he also asked me what are the 3 design patterns. This was an important question. Okay, I was not able to answer this as well. तो 3 डिज़ाइन पैटर्न्स, व्हाट आर द 3 इंपॉर्टेंट डिज़ाइन पैटर्न्स. ओके, पहले तो उन्होंने बताया कि डिज़ाइन पैटर्न्स पता है क्या. आई वाज लाइक नो नॉट एग्जैक्टली, बट ही टोल्ड आस्क मी अबाउट लाइक हाउ मेनी डिज़ाइन पैटर्न्स आर देयर. ओके, एंड देन ही टोल्ड आस्क मी अबाउट tell me the names and what are the information about these design patterns. So this is also one thing that I need to study. So if you talk about the design patterns, right? Okay, let's go to this and 3 design patterns, and we can find the 3 design patterns: creational, structural, and behavioral. Okay, tech. And if we go in here, alright, so creational, behavioral and structural. So ये एक बार पढ़ना है बाकी. And इतना होने के बाद he asked me about few questions here and there about some छोटे मोटे चीज़ें आजू बाजू के. एंड yeah, I mean that is it. That was my interview concluded, and I was not able to answer quite good enough, is what I think, and I need to prepare on this question. So yeah, a good experience.